Hello, 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 hello. Hi everybody, I'd request everyone to please settle down so we can start the program. Hello everyone, I'd request everyone to please settle down on their respective chairs so we can start the program. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाएं ताकि हम प्रोग्राम शुरू कर सकें. थैंक यू वेरी मच. Check. Hello everybody, we'll start the program in the next 2 minutes. I'd request you to please settle down. हम 2 मिनट में प्रोग्राम शुरू करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाइए. थैंक यू. We are starting the program in the next 1 minute. I'll request everyone to please settle down. 1 मिनट में हम प्रोग्राम शुरू करेंगे. Please settle down. Thank you very much.
Can we all please settle down? We are starting the program. Can we all please settle down so we can start the program? May I request everyone to stand up for the national anthem? हर बड़ी विरासत शुरुआत में बस एक हल्की सी आहट होती है, कहीं एक ख्वाब की तरह, कहीं एक यकीन की तरह, और फिर वक्त के साथ वही यकीन इतिहास बन जाता है। 400 साल हो गए यमुना के किनारे खड़ी उस सफेद खामोशी को। लोग उसे ताजमहल कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो किसी की मोहब्बत का धीरे धीरे पत्थरों में बदल जाना है। सदियां गुजर गईं, मगर उसकी रोशनी अब भी फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ चीजें वक्त से नहीं, नीयत से चलती हैं। फिर एक सदी पहले कुछ सीधे सादे लोगों ने अपने रोजमर्रा के सपनों से एक बड़ा नाम बुनना शुरू किया, जिन्होंने शायद कभी इतिहास लिखने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अपनी मेहनत से एक भरोसे की दुनिया खड़ी कर दी। 100 साल बाद वो सिर्फ एक कारोबार नहीं रहा, वो लोगों की आदत बन गया, भरोसा बन गया, घर का हिस्सा बन गया। और फिर इसी भरोसे ने 25 साल पहले एक और सफर शुरू किया, जरा अलग सा सफर, जहां कागजों से ज्यादा लोगों की धड़कनों को संभालना था, जहां सिर्फ दावे नहीं, टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ना था। किसी हादसे के बाद सिर्फ नुकसान नहीं, सुकून भी वापस लाना था। किसी मां की नींद वापस लानी थी, और किसी अजनबी से बस इतना कहना था, हम हैं। शायद यही वजह है कि बड़ी पहचान ऊंची इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं ऐसे लोगों से जो अपने काम को सिर्फ काम नहीं समझते, उन हाथों से जो रोज वक्त पर पहुंचते हैं, उन आवाजों से जो मुश्किल घड़ी में धीमे से कहती हैं, चिंता मत कीजिए, और उन रिश्तों से जो दिखाई नहीं देते मगर उम्र भर साथ चलते हैं। आज 400 साल की मोहब्बत, 100 साल का भरोसा और 25 साल की संवेदनाएं सब एक जगह आकर धीरे से मुस्कुरा रही हैं, जैसे वक्त खुद कह रहा हो कि कुछ नाम सिर्फ बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप मोहब्बत की तरह। आज की ये महफिल सिर्फ एक समारोह नहीं, ये 3 दौरों की एक साझा धड़कन है। आज जैसे फिर से उसी यमुना के किनारे सब एक ही रोशनी में घुल गए। एक ऐसा उत्सव जिसे वक्त ने नहीं, विरासत ने रचा है। और शायद इसीलिए कुछ नाम सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। बजाज जनरल इंश्योरेंस 25 सालों से हर सफर में, हर मुश्किल में, हर भरोसे के साथ केयरिंगली योर्स। Presenting to you, host of the evening, Vishal Malhotra. Good evening, ladies and gentlemen. Can I have some noise, please? 100 years, 25 years, so many milestones being achieved. I think you all can be louder. Can I hear a loud shout out? Let's get the energy pumping. You all are all youngsters here. Hi, sir. Good to see you again. Hello, everybody. My name is Vishal Malhotra, and thank you so much. I will be your host for the rest of this lovely evening, and definitely a lovely evening it is. Hello, ma'am. How are you? Looking so lovely in red as always. All good? आपसे मैं थोड़ी देर में बात करने के लिए आऊँगा जी. देखिए तपन जी, you know, ma'am gets a little shy, but we're going to, as per your instructions, we're going to break that shyness in the best way. This is all you do. Well, let me speak about this lovely evening with your permission. Ladies and gentlemen, founded by Mr. Jamlalal Bajaj 100 years ago, the legacy continues. 100 years, 100 amazing years. Hello, sir. Of Bajaj. 25 glorious years of Bajaj General Insurance. And we still believe in the philosophy which is made in India, you all can say this together, made in India, made for India, and made by India, which makes you and all of us proudly 100% Bajaj. I think you all deserve a very big hand for that. Ladies and gentlemen, just recently the entire nation, whether it's the metros in Pune or Orissa beautiful artists on the beach or the amazing Sea Link in Mumbai, which as a proud Mumbaikar we saw, the celebrations were celebrated across this amazing country. And what better and magical place to continue this celebration today. 400 years of the beautiful Taj Mahal, 100 years of amazing Bajaj, and 25 glorious years of Bajaj General Insurance. And why? Sometimes some of you may ask, why today? Why the 30th of May? And that's because today, as you know, there's going to be a glorious full moon which will shine upon the magical Taj Mahal, which all of you will witness later on tonight. So today is going to be a fun-packed evening full of amaze and magic. And before I invite our esteemed guest to come for the first time and start off this evening, ladies and gentlemen, we have a little video that's been made, 2 parts. Can we play the first video, please? Respected leaders from industry and public life, our distinguished guests and members of the Bajaj Parivar, thank you for being a part of this evening that is so special to us. We have seen the journey of our century. Jamlalal ji ke ideals
Bharat ki industrial journey and the story of Bajaj, which has evolved along with our nation. However, this evening is not only about the last 100 years. This evening raises another question. अगला चैप्टर कैसे होगा? हिस्ट्री में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं when everything starts aligning. Policies align हो जाती है, technology starts maturing, and the entire nation's energy starts flowing in the same direction. I believe our country now stands at that very moment. The stars are aligning, the dots are connecting, और दुनिया अब वो देख रही है जो हम हमेशा से मानते आए हैं, that the future belongs to India. What a moment to be an Indian. My father would often say, I firmly believe in the idea of India, in its diversity and its enterprising youth. And perhaps this is that moment. Because the next chapter of India's rise will not be written only through its factories and its balance sheets. वो लिखा जाएगा टेक्नोलॉजी से, वो लिखा जाएगा इनोवेशन से, and most importantly, वो लिखा जाएगा हमारे नौजवानों से. At Bajaj, we don't see AI just as a technology trend. We see it as a powerful force that will further financial inclusion. क्योंकि access to finance means access to opportunity. जब एक यंग एंटरप्रेन्योर को अपने आइडिया में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस आता है, जब एक स्मॉल बिजनेस अपना स्केल बढ़ाता है, जब एक फैमिली को इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलती है, तब सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बढ़ता, पूरा देश आगे बढ़ता है एआई के इस दौर में. बट एज जमनालाल जी ऑलवेज सेड, गुड इंटेंशंस unless translated into practice are worthless. Hence, turning intent into action, we are building deep partnerships with the best domestic and global institutions to build research capability and high-tech, affordable, AI-driven solutions. और हमारी objective simple है, not to copy the world, but to shape the future together. क्योंकि हमारी ambition भी simple है, to help build India into a global power. और अगर यह अगली सेंचुरी इंडिया की होने वाली है, तो हर जनरेशन को अपनी वॉइस ऑफ इंडिया ढूंढनी होगी. A voice that reflects our confidence, our resoluteness, and our limitless ambition. A nation's voice is found in many forms. Its dance, its art, and its music. These are more than just expressions. They end up being platforms for human potential. For over a century, we have viewed our businesses exactly through the same lens, as platforms that offer hope, freedom, and entrepreneurship. We believe that when potential is given a stage, the entire nation moves forward. Today, we are honored to host an extraordinary creator, a 3 times Grammy Award winner, who has composed all the music that you've been hearing this evening. He now presents a musical tapestry of the intertwined destinies of India and Bajaj, and a true expression of the voice of progress. A fantastic speech there, followed by what I must say I'm extremely excited about, and I don't know if anybody else, but I haven't seen it. An amazing director in our film industry. You must have heard of, his name is Mr. Raju Hirani, done films like Three Idiot, etc.
has made a beautiful AI film about the beautiful Bajaj family. With your permission, I would like to display that to everybody. Can we please have that video? Remember, it's AI, 100% AI. बापू, आपने इतना कुछ दिया देश को, फिर भी लोग आपको बोलते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी आपको बाय बोल के नहीं चाहता। वी आर रिटायर्ड आत्मास जमनालाल, रिटायर ही रहिए। जब मरे हुए लोग जिंदा लोगों की लाइफ में इंटरफियर करते हैं ना, तो भूत कहलाते हैं। बापू, आप मुझे अपना मुंह बोला बेटा मानते हैं। मेरे लिए इतना तो पता लगाइए कि मेरे पोते आपके बताए सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कमल नैन, रामकृष्ण मधुर और राहुल को तो मैं सिखा कर आया था। कथनी करनी एक सी, जो कहो वो करो। उन्होंने बच्चों को आगे सिखाया कि नहीं, पता नहीं बापू। जिद्दी हो। मानोगे नहीं ना। 100 साल बीत गए बापू, एक बार तो अपने पोतों का रिपोर्ट कार्ड चेक करना बनता है। मोरे, बापू, आप बाहर कैसे आ गए बापू? बेटा बजाज परिवार का रिपोर्ट कार्ड लेने आया हूँ। देखना है यहाँ बापू की कोई वैल्यू है या सिर्फ बापू के फोटो की। नहीं बापू, बजाज परिवार में कोई बाप की सुने या ना सुने, बापू की सब सुनते हैं। आप टेंशन मत लीजिए बापू, आप जाइए फोटो में वापस। अब तो पूरा काम करके ही जाऊंगा बेटा। जाओ, राजीव को बुलाओ यहाँ। हाँ। सर, मोहनदास जी आए हैं। कौन मोहनदास? एडवोकेट? हाँ, एडवोकेट है, पर वो अपने लीगल वाले नहीं। वो मोहनदास करमचंद गांधी। बापू बापू। आओ राजीव। बेटा ये क्या, हमें तो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और तुम अंग्रेजी बाइक पे बजाज का स्टिकर लगा के बेच रहे हो। बापू, ये अंग्रेजी नहीं, देसी बाइक है। 100% स्वदेशी। इसको इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करते हैं। अंग्रेजों से खरीदी नहीं है, उनको बेच रहे हैं। 108 देशों में बेचते हैं बापू। आपके साउथ अफ्रीका में तो एकदम सुपर हिट है ये। We are world's most favorite Indian now, बापू। ये कब हुआ? वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन तो मैं था। इस स्कूटर का क्या हुआ? राहुल ने इतनी शिद्दत से बनाया था। हमारा बजाज। यू मस्ट नेवर फॉरगेट योर रूट्स राजीव। कभी नहीं बापू। वो देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक बन गया है, ई चेतक। आप ही ने सिखाया था ना, ग्रीन इंडिया।
जमनालाल खुश होंगे ये जानकर कि तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हो। मैं तो रोज आपके मार्ग पे ही चलता हूँ बापू, एमजी रोड। नटखट हो। मोरे, चलो संजीव के पास। पहचाना? हम फाइनेंस वाले आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? आप तो हर नोट पे हो और हम तो वही काम करते हैं जो आप करते थे। वो कैसे बेटा? आइए बताता हूं। आपने देश को फ्रीडम दिलाई, हम देशवासियों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए। साल में करीबन 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को हम उनका पहला लोन, इंश्योरेंस, होम लोन और एफडी भी देते हैं। देश के फ्रीडम में ईएमआई नहीं लगता था बेटा। जोक है। आगे बोलो। बापू, बिजनेस के अलावा भी हम स्पोर्ट्स, म्यूजिक और आर्ट रिलेटेड फील्ड्स में काम कर रहे हैं। देश को आइकॉन्स दिलाने में लगे हैं। वेल प्लेड संजीव। मोरे, चलो नीरज और शेखर के पास। चलो। खादी जैकेट मुझे इम्प्रेस करने के लिए पहन लिया। नहीं बापू, ये सालों से खादी पहन रहे हैं। तो शेखर बेटा बताओ, तुम क्या कर रहे हो देश के लिए? थोड़ा जल्दी बताना, वापस भी जाना है। हेलो। Bajaj Beyond, it's a national CSR vertical. We are creating scalable social ecosystems to empower human capital through vocational upskilling, sustainable livelihood creation, and inclusive rural transformation models across multi-sectoral partnerships. मैं पुराने नेटवर्क का आदमी हूँ, इतना बफर नहीं कर पाऊंगा। सिंपल में बोले तो बापू, आपके जैसे देश को चरखा चलाना सिखा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, जैसे बाइक रिपेयर, सोलर पैनल लगवाना या कंप्यूटर चलाना, इस टाइप में। बजाज बियॉन्ड से देश के 2 करोड़ से भी ज्यादा यंगस्टर्स के स्किल्स डेवलप होंगे बापू। अरे बियॉन्ड का मतलब क्या हुआ नीरज? जो काम बियॉन्ड बिजनेस होता है बापू, मतलब फॉर नेशन, फॉर सोसाइटी। हाँ, इसीलिए बजाज बियॉन्ड। अच्छा। नीरव, तुम इतने चुप क्यों हो? बापू, आप ही ने कहा था ना, स्पीक ओनली इफ इट इम्प्रूव्स अपॉन द साइलेंस, एंड साइलेंस विद यू वाज सो गुड। साइलेंस अच्छा है, लेकिन देश को बदलने के लिए कभी कभी थोड़ा शोर मचाना पड़ता है। शोर तो मचा रहे हैं बापू, पर अपनी करनी से। आज हम देश के हेल्थ सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लगे हैं। आ रहा हूँ। निकलना होगा, जमनालाल बेचैन हो रहा है। लेकिन बापू, जाने से पहले एक ग्रुप फोटो तो बनता है। ले लो ले लो। क्या रिपोर्ट लाए हैं बापू? बाहर तो जमनालाल केमिकल लोचा हो गया है। 100 साल बाद भी बच्चों के दिमाग में हमारे ही सिद्धांत घूम रहे हैं। आज भी जो कहते हैं वही करते हैं। कथनी करनी एक सी है। Ladies and gentlemen, I think that amazing video deserves a standing ovation. That was incredible.
May I please invite Chairman Bajaj General Insurance and CMD Bajaj Finserv Limited, Mr. Sanjeev Bajaj, to please adorn the stage. Good evening, everyone. Just to confirm, this is the real me. Every time I see this film, and we've seen it develop over the last few months, it still gives me goosebumps because it makes us all very aware of our history, of our legacy, of our values, and what we stand for. I must say it was also odd for me to see myself speaking to me. But there was a reason for that. That speech, as you know and as Vishal mentioned, was what I made at our 100-year celebration a couple of weeks ago in Mumbai. That was, of course, about Bajaj. Today is about a very integral part of Bajaj, and which is Bajaj General. We know that we have had a century to build on an unshakable foundation of trust. But what is equally important is that 25 years, the last 25 years, Bajaj General Insurance has stood as the shield protecting that very trust. One policy, one life, one family at a time. And each of you, and so many of you, have stood by us, shoulder to shoulder, for these 25 years. And a very big thank you from all of us. I think a few people are looking for space there. If my team can find them some space to sit. So the story of Bajaj and India, and you saw it a little bit through this film that Rajkumar Hirani brought out so vividly. This story has never been separate. Walking alongside the freedom movement from 100 years ago, our founders built a business on ethics and nation building. My father, Rahul Bajaj, fiercely believed that Indian enterprise could both stand globally and serve its own people first. And Bajaj General carries the same centenary DNA. It is a lifelong promise to our nation. We mark a historic moment as well, and as many of you know, in the last quarter, by acquiring 26% of Allianz's stake, we are now fully Bajaj owned, equally and if not more committed to building the best general insurance company, not only in India, but in the world together. I am reminded by what my father again told me. He said, I firmly believe in the idea of India, its incredible diversity and its entrepreneurship. And with so many of you over here, we see that entrepreneurship. Instead, some of you all, I met your next generation as well, whether today or the last time we've met. And there is nothing else that exhibits the same. So whether it's a farmer in Vidarbha or a budding startup entrepreneur in Bengaluru, we protect their boundless potential. And for 25 years, we have mirrored this diversity by turning noble intent into concrete actions across every single policy, across every single claim. Because we know that India cannot be a global superpower without protecting its own citizens first. The general insurance industry, as it opened up to the private sector in the last 25 years, has seen an incredible trajectory and is expected to continue to grow at least 10%
year on year to reach over $60 billion in the next 4 years. And as Bajaj, we stand at the heart of this rising economy, de-risking dreams and providing every household the confidence to move forward. Our next chapter, and I talked about it in that speech, will be driven by technology and by innovation. We don't view AI just as a passing fad, but as a democratic, equalizing force that will break the boundaries of privilege and assist each one of us do our jobs better, more efficiently, and more inclusively. In addition, through tech-driven underwriting and platforms like MHCP Edge Plus, which we've just launched, we are engineering our own indigenous ingenuity, leveraging AI. The Bajaj legacy was forged by making progress accessible to the common man. We are hence driving financial security as Bajaj General and across all other companies, increasingly deeper and deeper into India, into Tier 2, Tier 3 cities, micro businesses, as well as marginalized communities. Because we believe that when human potential is provided a secure stage, the entire nation moves forward together. While our past 100 years, we have built great institutions, our next 100 years will be about building resolute ecosystems. Our objective is simple: not to copy the world, but to build the future together with each of you. We are looking at the next 25 years through a hyper-progressive lens, including in the short-term scaling up, whether parametric products or increasingly health coverage, but through smarter ways of doing that, not by just playing the pricing game as everybody else. And our ambition is very clear: to help build India into a global powerhouse. Not alone, we can never do that. Together with each one of you. So once again, a very big thank you for being part of this journey. But I must remind you, we are just getting started. Thank you. Thank you very much for those lovely words, sir. And now to continue this amazing evening, may I please invite MD and CEO, Bajaj General Insurance and Chairman of... That's a lot to say. Right, sir? I think I need that sip of water. Let me say that beautifully again. MD and CEO, Bajaj General Insurance and Chairman of GI Council of India, ladies and gentlemen, Dr. Tapan Singh. Please, would you join us on stage? "25 years ago, a journey began. Not measured in years, but in trust. 2001, Pune, Maharashtra. 141 people, one belief: to stand by India, no matter what came next. But this was not just our journey. It marked a new era for insurance in India. When the new millennium began with hope, so did a new era of uncertainty. The dot-com crash, the Parliament attack, the Gujarat earthquake, the Indian Ocean tsunami, the Mumbai floods. A nation pushed to its limits. The global financial crisis shattered confidence overnight. 26/11 shook Mumbai. Floods ravaged state after state. Communities destroyed overnight. And while disaster moved fast, we moved faster. Between it all, one of the biggest shifts in the insurance industry: de-tariffication. For decades, pricing was controlled. Overnight, competition took over. Premiums crashed by 80%.
The industry changed forever, but we never stopped building. Demonetization, economic shocks, historic floods, terror attacks, one disruption after another. And then the unthinkable, COVID-19. Families suffered. Fear entered every home. And when fear was everywhere, we chose to be present. In a world shaken by uncertainty, nearly 1,000 insurance companies globally couldn't survive between 2000 and 2025. But us? We just kept growing stronger. "25 years, countless crises, one constant. Bajaj General Insurance. Before the milestones, before the growth, here is how it all began. ये तालियां अपने लिए बजा रहे हैं। क्या क्या नहीं देखा हमने 25 साल में ना, सब साथ थे। मतलब अगर आपको देखो तो हर चेहरा, हर व्यक्ति साथ में था। हमने कहा पहले जब शुरुआत करें बातचीत की, ये समझें कि हम क्या क्या नहीं देखे, कहाँ कहाँ हमने देश की सेवा में अपने आप को आगे नहीं किया ना, कहाँ कहाँ, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो। जब कोविड हुआ, सबसे पहले जो बीमार पड़े कोविड से कौन थे? आप लोग थे, जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर थे हमको याद है, श्वेतल एडमिट हुआ, सब एडमिट पे कुछ भी हुआ। चाहे श्रीनगर में फ्लड हुआ, अभी छिब्बर जी की फ्लाइट लेट हो गई, चेयरमैन है जो JNK बैंक के खुद आ रहे हैं ना। हर घर डूबा हुआ था। 50% मार्केट शेयर था हमारा JNK में। 14-14 फीट पानी था उसमें। जब बीमारियां, मलेरिया, तो कौन खड़ा था ना? आप लोग खड़े थे ना। क्या बनाया है आपने? इतना कुछ हुआ देश दुनिया में। 1000 कंपनी बंद, 1000 कंपनी के पास बोलते पूरी दुनिया में 10,000 कंपनियां हैं। 10% कंपनियां बंद हो गई सब जगह। भारत में कुछ कंपनियां बंद हो गई। आपकी कंपनी टॉप 3 कंपनी पब्लिक सेक्टर से भी आगे निकल गई और 17 करोड़ कस्टमर। 17 करोड़ कस्टमर समझते हैं आप क्या है? 17 करोड़ कस्टमर मतलब कि भारत में हर तीसरा परिवार आपने उसका इंश्योरेंस किया ना। तो मैं ऐसी शौकिया सोच रहा था कि अगर 17 करोड़ कस्टमर हैं तो हमारी पोजीशन ग्लोबल क्या होगी, क्योंकि शौक था। हमने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे हम अभी क्या, अभी तो शुरुआत है वो जोश था। तो मैं जब गूगल सर्च किया, आप सर्च कर सकते हो, आपको आश्चर्य होगा, सबसे बड़ी कंपनी के पास खाली 20 करोड़ कस्टमर है, आपके पास 17 करोड़ हैं। यानी कि आप दुनिया में एज इट इज आज टॉप 3 या 4 कंपनियों में आपका नाम आ रहा है ना। आपने जो कंपनी, जहां जब कंपनियां बंद होती गई, क्राइसिस पे क्राइसिस आया, आपने अपने जान पे खेल के लोगों के साथ दिया, देश का साथ दिया और ऐसी महान कंपनी बनाई जो दुनिया के टॉप 3 या टॉप 4 में आएगी। क्या गजब का काम किया है, अभिनंदन है आपका ना। आप सब जो यहाँ बैठे हो ना, आप सबके नाम पे हमने एक सितारा का नाम रखा है। अब सबसे पहले तो हमने आपको दिया था, याद है कितने 3-4 साल पहले ना। आज आप सबको, आपको जब रूम पे जाओगे, आपके नाम पे एक सितारा का नाम रखवाया हमने ना। एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वी हैव नेम्ड अ स्टार आफ्टर यू। व्हेन यू गो टू रूम यू विल फाइंड इट। बाय अ टेलीस्कोप व्हेन यू गो बैक होम। अपने आप को आसमान में देखिए, क्योंकि आप हमारे सितारों हो जिसने इस कंपनी को बनाया है। आप जब देखोगे वो है, एक तो वो रखा है। तो सबसे मैंने कहा कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप याद रखो ना, कि खाली भारत में क्यों, इंश्योरेंस इतिहास में क्यों, आपको सितारों में भी ना आपका नाम हो, आपकी जगह हो, जो आपका राइटफुल प्लेस है। तो एक तो वो है। दूसरा 25 साल है सिल्वर। मोदी जी ने कहा कुछ भी हो सोना मत खरीदना। हमने अच्छा 50 साल नहीं हुए, 25 ही हुए, चांदी मना नहीं किया है। तो सिल्वर कॉइन है 25, एक वो है आपके लिए ना। और एक और चीज़
विक्रम क्या एक और चीज़ हम लोग रखे हैं, एक लोकल आर्टिस्ट जो हलवा बनाते हैं ना, एक वो रखा है। तीनों चीज़ें आपके लिए ना एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, एक नो आपकी जो आपने जो काम किया है देश के लिए, नो इस कंपनी बनाने में जो योगदान किया है, एक छोटा सा नो टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उस चीज़ के लिए। ये तो हो गया कस्टमर्स का ना। क्लेम्स का आपने सोचा है कि बजाज जनरल ने कितना क्लेम दिया होगा? कुछ अंदाजन है आपको दिमाग में, मतलब कितना क्लेम दिया होगा? नो 1 लाख करोड़ के ऊपर क्लेम दिया है। 1 लाख करोड़, हाँ, तो सोचा आपने? 3 करोड़ एसएमई एमएसएमई को क्लेम दिया है। जब हम बात करते हैं 3 करोड़ एसएमई एमएसएमई को क्लेम दिया है, उसका तात्पर्य क्या है? अगर आप कभी गूगल करो, जब भी कोई हादसा होता है, कोई विपदा आती है और एसएमई एमएसएमई उसमें बर्बाद होते हैं, तो 25 से 30% एसएमई एमएसएमई वापस खड़े नहीं हो पाते, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। एक वो व्यक्ति जिसकी ख्वाहिश थी दिल में कि एक दिन हम भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम भी एक दिन अंबानी बनेंगे, टाटा बनेंगे, बजाज बनेंगे, उसकी फैक्ट्री बह जाती है, वो सड़क पर जाता है, दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, तो कमर टूट जाती है उसकी। अगर हम कहते हैं 3 करोड़ एसएमई एमएसएमई को क्लेम दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कम से कम 70-80 लाख एसएमईज को हमने बर्बाद होने से बचाया है, हमने उनको बैंकरप्ट होने से बचाया है ना। आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि हमने 10,000 आई थिंक 10,000 नहीं 10 करोड़ परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस किया। जब हम बात करते हैं 10 करोड़ परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस किया है, तो उसका मतलब क्या है? आप अगर फिर से स्टडी करोगे, भारत में 10 करोड़ भारतीय हर साल गरीबी रेखा के नीचे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते। ये गूगल कर लो, आजकल तो बहुत आसान है, चैट जीपीटी, गूगल क्लाउड जो इस्तेमाल करना है कर लो। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी that so many Indians go below poverty line because they could not afford health care. And I was thinking, how does this happen? No, it is simply because जब जो ब्रेड अर्नर है घर का वो बीमार पड़ता है, उसको शहर लेके आते हैं, पूरा घर के जेवर, घर गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं ना। कोई आदमी छोड़ेगा नहीं अपने घर के सदस्य को, और वो नहीं बचता है, सब चीज़ दांव पे लग चुका होता है, फिर वो परिवार एकदम से टूट जाता है। जब सब डर रहे थे गवर्नमेंट हेल्थ बिजनेस करने का, जब सब डर रहे थे स्टेट में ना, आपकी कंपनी ने गवर्नमेंट हेल्थ बिजनेस किया, स्टेट पे गए, 10 करोड़ परिवार जो गरीबी ने उनका बीमा कराया। अगर इससे अंदाज लगाएं तो कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग जो बर्बाद हो जाते उनको बचाया ना। जब आप क्लेम्स का सोचते हो, आपको उन आंकड़ाओं को इसके साथ जोड़ना है। यू हैव टू मर्ज द टू टू अंडरस्टैंड what you do for society. No, that is where the power comes in. No, when you are insuring somebody, the cause that you do, the impact that you make is phenomenal. You save people from going below poverty line. You save people from committing suicide. 8 करोड़ फार्मर्स का इंश्योरेंस किया हमने। आप सब पढ़े हो गए, मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने कहा था जिस जिस स्टेट में क्रॉप इंश्योरेंस हुआ, जब से शुरुआत हुआ, उस स्टेट का फार्मर सुसाइड रेट का क्या कोरिलेशन है। एंड आई डेमोन्स्ट्रेटेड कि जहां पे क्रॉप इंश्योरेंस अच्छे से लागू हुआ है वहां पे फार्मर सुसाइड रेट गिर गया है। $10,000 करोड़ हेल्थ में दिया गरीबी रेखा के नीचे, 15,000 करोड़ फार्मर्स को दिया क्रॉप इंश्योरेंस जब खराब हुआ ना, 3 करोड़ एसएमई को बचाया। हम वो बात कर रहे हैं, हम बड़ी उद्योगपति की बात नहीं कर रहे, हम मोटर क्लेम की बात नहीं कर रहे, जो रईस हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है उनकी नहीं बात कर रहे। आपकी कंपनी आपके मेहनत से जो इस देश में जो इम्पैक्ट लेके आई ना, उसको आपको समझना है। क्यों मैंने कहा कि आप सबका अभिनंदन है, आपने इस देश के लिए जो किया है, जो बनाया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।
I've been in this industry for over 3 decades. And I want to begin by telling you about something I saw early in my career. A moment I've never been able to shake. A man in a queue in an insurance office. He had been in a car accident holding a bumper in hand. His arm was bandaged. He had been there since the morning. He had brought every document they asked for, and yet he was still waiting. Not because the system was cruel, but because no one had ever designed it with him in mind. That image stayed with me for years. It became the lens through which I understood what our industry needed to become. In the year 2000, India's general insurance industry was worth roughly 11,000 crore rupees. Not a small number, but measured against the needs of 1 billion people, it was barely a beginning. One dominant channel, one kind of relationship, one agent, one briefcase. And a nation that had largely been told, insurance is complicated, leave it to us. The protection gap wasn't just financial. It was a gap in trust, in access, a gap in empathy. And somewhere in that gap, that man in the queue was still waiting. गंभीर साहब राणा आपको याद होगा 25 साल पहले मोटर का क्लेम होता था तो पहले तो स्पॉट सर्वे, ठीक है, फिर सर्वे जब गाड़ी बन रही है, फिर फाइनल सर्वे, उसके बाद बम्पर हेडलाइट क्लाइंट लेके जाता था आपके वर्कशॉप से, इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर जाता था रिक्शा में बैठ के, फिर वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वो मिलाते थे और कोई चीज़ छूट गया तो उसे क्लेम से काट देते थे और 3-4 महीने में तो चेक मिल जाता था तो खुश होते थे ना। गंभीर साहब कहाँ बैठो आप, हो ना? हाँ आवाज़ है, ठीक है। जब कंपनी शुरुआत की तो आप सब ने कितने जोश से शुरुआत की थी मोटर का बिजनेस, कोई लिखना नहीं चाहता था। आज आपके सामने लाइन लगी है 30 कंपनी की, पहले वो डरते थे मोटर बिजनेस करने से, कहते थे नुकसान है, कोई नहीं करता था। याद है गंभीर साहब उस दिन कि हम लोगों ने शुरुआत किया, कैशलेस शुरुआत की। लोग भूल जाते हैं इतिहास कि 25 साल पहले एक मोटर क्लेम कैसे पे होता था। कैशलेस शुरुआत की और क्लाइंट को बोला आप चिंता नहीं करो, वॉक इन वॉक आउट, और ये बोला कि डीलरशिप जो है वो सेटलमेंट पॉइंट रहेगा। एंड वी बॉट कैशलेस टू इंडिया। दिस पीपल डोंट रियलाइज कि हाउ क्लेम्स वेर पेड just 25 years back to how they are paid now, and which company bought it to the country. It was Bajaj, General. I'm so happy to see all of you. आप सब यहाँ बैठे हो, and I'm just remembering, हमको याद है मतलब before even the company started, तो गंभीर साहब कितने चाय हम लोगों ने पिए समझने के लिए ना, how do we put that together. You were architects of it. आप सब भूल गए, कैशलेस भारत में आप लोग लेके आए थे. You brought cashless to India. Today everybody talks about it. Any innovation that you see which has happened in the insurance business in India, your company bought it. I just want to refresh your memory, for everything, how and what and when it happened. So I remember that it is a continuous process in which it got done. Travel policy issue होने के लिए, and आप लोग तो हो 30 साल 35 साल इंश्योरेंस कर रहे हो, शाम का 5 बज गया, कस्टमर को ट्रैवल करना, उसको पॉलिसी मिलना असंभव था. आप कुछ भी कर लो, आई थिंक कहाँ गया पालीवाल, हाँ वहाँ पालीवाल बैठा है, याद है पालीवाल, 5 बजे तो पॉलिसी ले पाते थे. असंभव था कि आप पॉलिसी निकाल लो. भारत में सबसे पहले ऑनलाइन पॉलिसी बजाज है. रात हो दिन हो सुबह जब चाहो पॉलिसी जहाँ से चाहो ले लो ना. आई थिंक कितना समय बदल गया. आप सब 25 साल से हो, पहले और बाद में कैसे एक एक चीज़ करते हुए बदला. आज श्योरिटी बॉन्ड बेचते हैं लोग. आई थिंक मुझे याद है गडकरी साहब ने कहा कि श्योरिटी बॉन्ड आना चाहिए. निर्मला जी ने बजट में कहा. किसी कंपनी की हिम्मत नहीं थी कि भारत में श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च कर सके. जब वो गडकरी साहब से बात हुआ, बोले कि श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च करना है, और मैंने कहा सर लॉन्च तो करेंगे लेकिन तभी जब आप लॉन्च करोगे.
पहली बार भारत में कैबिनेट मिनिस्टर ने एक कंपनी का पॉलिसी इशू किया. वी आर द फर्स्ट टू ब्रिंग दैट. आज कम से कम 30,000 करोड़ कैपिटल फ्री कर दिया हमने. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो देश का जो बनने में उसे कतरे कतरे में हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, आज जब 25 साल के लिए हम लोग खड़े हैं, एसेंशियल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दैट. और आपने जो किया है देश के लिए वो चीज़ याद रखने की जरूरत है. जस्ट रिमाइंड सम ऑफ यू of how it all began. On a quiet morning in Pune in the year 2001, a company was born. Not from legacy, inherited customers or existing systems. From 141 people and one shared purpose, that India deserved something better. 141 people, not just employees, believers. Many had left stable careers, familiar institutions, the comfort of the known, to walk into an empty office and build something that didn't yet exist. That kind of courage has a name. We call it purpose. Behind us stood two extraordinary names. Bajaj, a name that has lived in Indian households for generations. Not just as a brand, but as a promise. Generations of Indian families rode Bajaj to school, to work, to weddings. When Indians trusted a name, Bajaj was often that name. And Allianz, one of the world's most respected insurance institutions, bringing to India not just capital, but a century of global knowledge about what insurance done right looks like. We had no template, so we did what builders do. We made one. Every decision came back to the same question. Does this make life better for the person who needs us? First to issue policies online, because no customer should travel miles for a piece of paper. We built health administration team, so the unwell wouldn't have to fight paperwork. We opened the industry's first all-women branch, launched Drive Smart, India's first telematics product, introduced the first individual cyber insurance policy, pioneered pet insurance, surety bonds, products the industry hadn't imagined yet. We expanded through bank assurance, OEM partnerships, the virtual office network, taking insurance where it had never reached before. At one point, a new Maruti in millions of homes came with protection from Bajaj Allianz. That's not a distribution statistic. That's how deeply we entered the life of everyday India. Every step of the way, our commitment to India was world-class insurance. Human enough to understand you, strong enough to stand by you. That commitment became our foundation. मार्च 2002 याद है आप लोग को? Every Maruti sold in India was insured by Bajaj. Every Maruti, याद है आपको राणा साहब? मार्च 2002, every Maruti sold in India, every 100% was insured by Bajaj General. I think हमको याद है जब कंपनी शुरुआत कर रहे थे हम, I think I left a stable government job, घर पे थे, and जब अगले दिन मुझे जाना दफ्तर में, रुक गया घर पे. संगीता मेरी धर्मपत्नी हमसे पूछी कि क्या हो गया, रुक क्यों गए? रोज सुबह जल्दी में रहते ऑफिस जाने में आज. तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाना है. कोई दफ्तर था ना कोई जगह थी. तो बोली यार माँ ने मना किया था मत शादी करो. आज उनकी बात सच लग रही. पता नहीं कहाँ जाना है, दो छोटे छोटे बच्चे, नौकरी छोड़ दी, ठीक ठाक चल रही थी, पता नहीं क्या जाना है, क्या मतलब है इसका. हम बोले यार पता नहीं, हमसे कहा कि बिल्ड करो नॉर्थ, ना दफ्तर है ना बैंक अकाउंट है ना, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, बस बोले ऑफिस ढूंढ लो, बिजनेस शुरू करो. कहाँ जाना है पता नहीं. बोले अगर नहीं कर पाए तो? बोले तब पता है कहाँ जाना है. बोले कहाँ? बोले घर पे रहना है. अब देख पा रहा हूँ कुणाल, राहुल, सब.
कुणाल बैठे हैं पीछे. He was a national squash champion. Allahabad में थे ये. I remember once, he came to me and said, इंश्योरेंस करना है मुझे, एजेंसी चाहिए. तो हमने क्यों एजेंसी दें आपको? तो आप तो स्क्वाश प्लेयर हो, नेशनल स्क्वाश चैंपियन हो, एजेंसी क्या करो? बोले नहीं, मेरे पास बेकरी है, सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना ऑफिस सेटअप करना है, इसलिए इंश्योरेंस. हमने ऐसे इंश्योरेंस एजेंसी नहीं मिलती. जाओ डेमोन्स्ट्रेट करो, गो फाइंड आउट सम कवर नोट्स. कुछ कवर नोट नहीं ला पाओगे तो बीमा क्या लाओगे? कुछ 50-100 कवर नोट लेके दिखाओ तो फिर तुमको एजेंसी देंगे. और कितना टाइम दिया था कुणाल तुमको? 1 वीक. हफ्ते. उसको भी याद है यार, तुम भूल गए 25 साल पहले की बात. तो 1 हफ्ता कुणाल फोन करते 2 दिन में, साहब 200 कितना इकट्ठा किया तुम? 800. 800 करोड़ इकट्ठा कर लिया हूँ, लाइसेंस दोगे? बोले हाँ यार 800 गजब का लड़का है, लाइसेंस देते हैं. तो देन आई गिव हिम, आई रिमेम्बर राहुल आए थे हमारे पास बोले कि नौकरी दे दो. बोले क्या उम्र है? बोले 45 साल. बोले एक्सपीरियंस क्या है? बोले मैं हेड सेक्रेटरी रहा हूँ. मैं बोला हेड सेक्रेटरी बीमा कंपनी अभी खुली नहीं है, 2 लोग नौकरी नहीं है, तुम्हें क्या नौकरी क्या दे दो? अंडरराइटिंग आता है, क्लेम आता है? बोले नहीं कुछ नहीं आता. तो मैं बोला राहुल क्यों नौकरी देते हैं यार? बोले वो डंकन्स में काम कर रहा था, बंद हो गई है, नौकरी दोगे नहीं तो चलेगा कैसे? हम लोग छोड़ो यार, नौकरी तुमको नहीं मिल सकता इस उम्र में. तो बोला बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, बहुत उम्मीद से आया था. हम लोग कल सुबह टाई वाई पहन के आ जाना, जहाँ मैं जाऊँ मेरे साथ चलना. बोले क्या होगा उससे? हमने तुम एक दिन वो देखोगे जब तुम्हारे घर में सीईओ जाएंगे तुमसे मिलने. विश्वास है तो आ जाओ, नहीं विश्वास है तो मत आओ. विश्वास होने का ऑप्शन नहीं था इसके पास, नौकरी तो थी नहीं, तो ये आ गया बेचारा सुबह गाड़ी लेके. आते हैं सीईओ के नहीं आते राहुल भाई आज? घर में आते हैं ना सब मिलने. जो वादा किया था पूरा किया ना. ऐसे बनी कंपनी. जब ये तो exactly. To put that on, again, this was my intent to trigger these emotions in you. जब 25 साल पहले जब आप सब ने शुरुआत की ना, तो और तुम्हारी बात तो करना, तुम तो ऐसे भी धुरंधर थे तो कोई चिंता नहीं. तो ठीक है. तो fundamentally, I think it started with very simple people. No fancy, no big names. Simple individuals, with clear heart, they came in. Each one of you has a story. And if I talk about your stories, I can go to depths of it, because all of you are so close to me. I know your stories of starting how to sell, Rotomac pen in buses, to building the empire you have built where, you have stars as your brand ambassadors, to how from nothing left your village with nothing in hand, to building franchise today, which runs across different cities. We have worked together building the stories of what it is and how we build. How simple people can do so much for the country. Nobody talks about how that can be related to building an organization which will last for hundreds of years. Is something I thought we'll speak about. "33 years taught me this. The true character of an insurer isn't written in its annual report. It's written in the moments when life breaks down. In 2014, the floods in Jammu and Kashmir devastated communities overnight. The situation in Jammu and Kashmir looks very grim. Security forces are trying to rescue those who are stranded their lives. People lost homes, vehicles, livelihoods, certainty. Everything they had built for years was gone in hours. We moved fast. We sent teams into the field, created dedicated support structures, settled claims worth over 1,000 crore rupees. But more than the number, we were present. In a disaster, presence is its own promise. And then came a crisis none of us had prepared for.
the pandemic. In that moment, instead of being a system, we chose to be human. We issued 27.7 lakh COVID-related policies. We settled 11.4 lakh claims, all while maintaining one of the lowest grievance ratios in the industry. These numbers aren't here to impress. Behind each one is a family that called in fear and heard someone say, "We're here, we'll take care of this." That is what insurance is for. Not paperwork, not fine print, presence. छिब्बर साहब जो चेयरमैन हैं J&K बैंक की, उनकी फ़्लाइट डिले हो गई. If he was here, 2014 में श्रीनगर had floods. We had 50% market share in Srinagar, which meant every second insurance was ours. And the flood was 14 feet deep water. You know, I personally went there and I saw कि खाने को नहीं है, no, पानी नहीं है. We flew in people from all across the country. हम बोले जितना खाना पानी बिस्किट लेके आ सकते हो आ जाओ. कैंप लगाओ और घर घर जाके चेक दो. डेटा मालूम है, एड्रेसेस हैं, नो, लॉस दिख रहा है. Why should we not go and play? एजाज हैं यहाँ पे? हाँ, एजाज. उस समय एजाज ब्रांच मैनेजर थे वहाँ पे. नो, आई रिमेंबर. आई थिंक 2-3 महीने में इन्होंने 30,000 क्लेम दिया और 1100 से 1200 करोड़ का क्लेम दिया. सरकार की तरफ से 300-400 करोड़ का रिलीफ आया था ना. मतलब 2014 का 1200 आप है तो आज 2026 में सोचे तो अमाउंट क्या होगा ना. 4-5 हज़ार करोड़ का क्लेम आज के वैल्यू के हिसाब से ना वॉज पेड और घर घर पे किया. 3 महीने के अंदर दे पेड. श्रीनगर में आज भी आप जाओगे, बजाज जनरल बोलोगे तो बोलो वहाँ काम करते, तो वादा करता हूँ आपको फ्री चाय अभी भी मिलेगी. पीपल सो टच्ड. जो भी अपने एम्प्लॉयज़ थे, कोई जा रहा उनके हाथ चूम रहे, उनके थैंक यू कर रहे. नो, व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू इज नॉट एज something that no you have to feel that we did a great job. No, it's our duty. We just did a duty. But the fact is that when you do this small task of insuring somebody, when you're standing for people, what impact you make on society and what does it do to the bank. Unka flood ke karan, which was very devastating, not a single NPA happened. ना आज बैंक इंश्योरेंस में इतनी चर्चा होती है. Has anybody thought that because Bajaj General and J&K Bank had a tie-up, floods happened, devastation happened, not a single NPA happened by the bank? No? And that's why even today, Chibbar Saab, who is the chairman of the bank, still wants to come. One of our first banking partner in 2002, when terrorism was at its peak at Srinagar, I remember going there and staying in the hotel, and Lalit was the hotel, the big one, and just 1 or 2 people staying. Nobody dared to go. We set up branches then, Doda, Pathankot, no, all the names that you hear, Baramulla, no, travel to each other's place. Deepak Dar bhi honge. Deepak, where are you? No, yeah, you remember we traveled, no, in all these places, Sopor, bullet-ridden places, to serve the nation in the furthermost corner of the country for days like this, no. Any kind of major disaster, the company was always there. And my people and all of you always there, to which till date I feel very, very grateful. At times a lot of people ask me, "Yaar, if this person is not performing, why should he continue?" उनको क्या बताऊं जो हमारे दिल में उसकी याद है, जब उस तकलीफ में जब कोई नहीं था, नो, उस बाढ़ में वो खड़ा क्लेम का चेक काट रहा था, नो, what he has done for the nation and what he has done for the country, something remains. That is why each one of you, आप लोग कुछ भी नालायकियत करते हो, मोहब्बत मेरी कम नहीं होती है. आप सब ने कभी न कभी किसी न किसी समय ना देश के लिए, कंपनी के लिए जो किया है, वो आभार हमें आज तक याद है ना. In 33 years, I've watched technology remake everything. Digitization, automation, AI, transforming how insurance is bought and serviced. And I believe in every one of those advancements. But I also know this. When a farmer in a small village is trying to understand what a policy means for his livelihood, he doesn't need an app, he needs a person.
someone who speaks his language, sits across from him, and explains not just the policy, but the promise behind it. When India was still learning to trust private insurance, it was our advisors who went door to door and earned that trust. One conversation, one claim, one family at a time. Technology made us faster, innovation made us stronger, but advisors made us real. So we made a decision, not just to work with them, but to celebrate them. In 2023, we launched GIFI, the first celebration of its kind in the industry. In 2025, we took it global with GIEA, honoring advisors across India, Asia, the Middle East and North Africa. And while we honored them, they were doing what they do best, growing India's trust in us. These are not revenue numbers. These are families, farmers, first cars, first homes, first policies. Each number, a promise kept. अगर आप सर्च करो 2008 या 9 का हमारा इंटरव्यू होगा इकोनॉमिक टाइम्स में, जब लोग बात कर रहे थे कि इंटरमीडिएट्स खत्म हो जाएंगे, इट विल बी डायरेक्ट टू कस्टमर. अमेजॉन आ रहा था, D2C हो रहा था, नो ऑल दिस वाज हैपनिंग. ऐसे इंटरमीडिएट्स रहेंगे अपने बिजनेस में. यू विल ऑलवेज हैव इंटरमीडिएट्स बिकॉज इट्स अ पीपल ड्रिवन बिजनेस, एंड दैट इज व्हेन नो टुडे इफ आई लुक फास्ट फॉरवर्ड, Bajaj General built the biggest distribution network in Asia at least, if not the world. Bank insurance, we are the biggest, 240 banks. No company in the world has so many types. 100,000, 1 lakh, no, distributor advisors, 10,000 dealership, a massive distribution. Our faith was on distribution, which is still there today, no? And that is why this company got built to where it is. And in the future also, as you progress, I think our investment on distribution will continue. I think that was something which I thought will bring to your notice. History remembers monuments, rarely the hands that built them. It took 20,000 craftsmen to build the Taj Mahal, each one building something larger than themselves. Our company was built the same way. Today, our builders are everywhere. The claims officer who stays until every case is closed. The advisor who drives hours into a district to patiently explain what protection means. The tech team that removes one more moment of friction. The service team that answers every panicked call with, "I've got this." They may never know the amount of the lives they changed. But every day, they build something that will outlast all of us. Trust, safety, a more protected India. To me, that is the most honorable work there is. As we grew, one belief never wavered. Care that waits is not enough. Care must move first. Care must be proactive. The kind that reaches you before worry becomes helplessness, before a gap becomes a crisis. We call it Forward Karo Care. A philosophy that believes insurance isn't just compensation after a loss. It's presence before the loss, during it, and long after the claim is settled. Because the person we serve isn't a policy number. They are a person with a family, with ambitions, with fears. They deserve insurance that sees them that way. आज जब हम ताजमहल को देखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि भी आज से 450 साल पहले जब लोग उस पर काम कर रहे थे,
कभी उन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसा इमारत बनाएंगे हम जो 400, 500, 1000 साल तक लोग देखने आएंगे. I think when each one of you are building this magnificent company, you are not realizing this company will last for hundreds of years. No? जब जमनलाल बजाज साहब ने ethics, values पे उन्हें कहा कि business has to serve a purpose, business has to serve the society, and they built that 100 years back. Was he thinking that after 100 years this will happen? And that's why that movie is so beautiful, no? When you look at it. Do we realize that the company we're creating, Bajaj General, no, after 300, 400 years, there would be some gathering happening somewhere where people are talking about a magnificent company or what it is doing for the country. I think, no, that is why when you look at something of magnificence and its creation, your contribution in building that is invaluable. No? Remember that every time. So tomorrow when you go to a customer, you speak to a customer for a sale, in your mind, keep this thought. One, we are doing something for society, for the country, and I'm also making a difference, like the soldiers do, like the doctors do, for our country. And we are building something which will last for hundreds of years. That's why it has to have ethics, it has to have morality, it has to have the right practices, it has to be for the customer, because we're not doing something which is for tomorrow. We're doing something which is going to last. No? I also like to mention Srini is here. No, 22, 23 years he's been with us. One of our early CFOs, just immediately after Mr. Ladda. High energy, high passion, a good friend over all the time. Even today, I think, no, when it comes to the company, fighting on. I have some directors here. I had Mr. Suraj, I think you have been there, sir, for what, 20 years, 22 years as our director. We have Wadwan Saab, we have Sahai Saab, here, who join us, always guide us. And on top of it, we have a chairman, Mr. Bajaj. I think I have had the honor and privilege of working very closely with him for at least 18 odd years and knowing him for at least 20 plus years. As a chairman later, as a director earlier, sitting next to him. A lot of stories again that we have together. Will you believe that a person of his stature, we would go on a rickshaw in Old Delhi, to Kareem's to have food? Or would you believe that we're sitting in board meeting and my phone goes off suddenly because I was looking at something and you would say, Jaldi baaj aao rok. He has been a friend, philosopher, guide, guiding us, building this company to where it is. And when I look at the Caringly Yours, when you look at that, and if I have to personify that, put a name, it is Shefali Bajaj. I've told this openly, she didn't like us mentioning this. But for me, she stands for what exactly Caringly Yours means. So that the Caringly, when I put, I think if you have to learn about care, about minute detail of everyone that you see, the way she would take care. An amazing family, where they're not building businesses for personal wealth. And this, I think, Sanjeev told me many years back, I do not know if he remembers it. He said for everybody else, all business houses, they may have something, for us, we are on salary. The money is in a trust. It is not like, my entire wealth is in the companies. The companies don't do well. It is not that I can just, disappear overnight. Everything that we do in the companies, and from that company, everything that we do is for the society, even till date. How many business houses can talk about creating a structure like this? Have you thought about this? Try and check that out. I don't think till date. And you look at the amount of work they do, or they've already committed 5,000 crore on building skills for the country. One of the most untalked about houses and the way they operate for the society till date, has been something to be there. It's been an honor and privilege for me to be here. And when I talk to him, I always say, think about the next 100, 200 years of how do we build that together. It's been a phenomenal time with all of you building. My friend here, Kaushik, one of the amazing leaders, I think, in the housing space, is unmatched with his energy level and the way he does that. I have so many friends, sitting here. I would like to name each one of you. I said, that would take away the entire space and time. As it is, my team is saying you're overshooting the time now, to stop your talk and put on. Vineet, India Insure was the #1 broking license, remember,
It was the first broker to get the license, and the way, you know, we work together. You have the #1 license, right? India Insure, yes, you're the first broker to, I remember, you know, when he was an agent in New India to moving to setting up the broking firm, how we, you know, helped and built that together. I've given you a very good leader from my side now. Dhingra Saab, I think how many of you know his story? An engineer from, you know, IIT, sets up a SME, MSME, goes bankrupt because of, you know, partnership issues, then sets up, you know, one of the best broking firm, Prudent, that you see today. Each one of you has a story of resilience, grit, determination, desire to make a difference to wherever you are, irrespective of circumstance you have it. This is all that is required. We are an amazing country, amazing place, amazing company. Let's build this to be a magnificent company where people talk about it even 1,000 years from now. No, thank you once again. No? I'm sometimes asked what it feels like to lead a company celebrating 25 years. Honestly, it feels like responsibility, because 25 years is not a celebration of what we've done. It's a reminder of what we've committed to do. To make insurance accessible, to make it human, to show up not just when it was easy, but especially when it wasn't. And as the Bajaj Group completes 100 years in 2026, a full century of building trust with India, our 25-year journey becomes part of something much larger than any one company. It becomes a testament to what happens when the purpose is consistent. I've watched this industry transform. Skeptics become believers. Technology changes what's possible. But one thing has not changed and must never change. The person on the other side of every policy. They are why we exist, why we innovate. Why do we show up every day in every city, every town, every village? 25 years ago, 141 people walked into an empty office and decided to do something better. Today, 10,000 of us carry that decision forward. The promise is not behind us, it's ahead of us, and we are just getting started. Boss, we have to launch that coffee table book, so request you to know, come over. Yeah. No, thank you. I can request all our directors to be here. No, come. Raman, though you are an ex-CFO, but no, I always said the CFO of the group comes from us only, so no. My CDOs, no, come over. CFO, current, Aves, come over. Yes, you also to come. Just bring your Copy. Yes. Yes, Sangeeta has to come to my rescue like every time. Thank you. Now, normally you do from the stage, but as I said, we do it collectively. Each one of you has this with you. We'll request all of you to stand up and do the launch. It's together that we do it, It's all of us together. So this is the coffee table book for 25 years. Some memories for each one of us, here. So I think. Please, पीछे भी photograph लीजिए. I think they are launching it more than what we are doing it. It'll be Please, please click everybody. Yes, thank you. Yes, please. Oh, the robo. Yes, that's what I was thinking. Where's the book? It will go to Sanjeev. So now it's confused with Sanjeev. So it was the two. Okay.
checking. Raman, like you're under threat now. AI will take your job. I can see that. No, it's not from there. So please be careful. He's a frisky robot. So I would suggest that nobody goes in front of him. That's our friend Roberto, the amazing, good-looking robot who just helped in launching the coffee book. Ladies and gentlemen, the amazing coffee table book, which portrays the beautiful journey of Bajaj General Insurance in the last 25 years. Thank you. Congratulations, one and all. Thank you very, very much to each and everyone.